purpose, O Lord. हम आराधना करने के लिए आत्मा के द्वारा आराधना करने के लिए जा रहे हैं, हमारा साथ हो। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आमीन। Shall we turn to Psalms 150th Psalms? Psalms 150th Psalms. 150 भजन संहिता। Let's read the whole Psalms. पूरा अध्याय हम पढ़ेंगे। We'll read alternatively. एक पहले हम पढ़ेंगे, बाद में आप भी पढ़ सकते हैं। We'll read first verse. पहले भाई पढ़ेंगे। యెహోవాను సన్నతించుడి, ఆయన పరిశుద్ధ నామమందు దేవుని సన్నతించుడి, ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు ఆకాశ విశాలమును సన్నతించుడి, ఆయన పరాక్రమ కార్యములను బట్టి ఆయన స్తుతించుడి, ఆయన మహాప్రభావం బట్టి ఆయన స్తుతించుడి, బూర ధ్వనితో ఆయన స్తుతించుడి. 3వ వచనం చదువుతున్నాను. బూర ధ్వనితో ఆయన స్తుతించుడి, స్వరమండలములతో సితారతో స్తుతించుడి, మ్రోగు తాళములతో ఆయన స్తుతించుడి, గంభీర ధ్వని గల తాళములతో ఆయన స్తుతించుడి. సన్నతించుదురు గాక. The last verse says, everything that hath breath praise the Lord. आखिरी वचन कहते हैं, पर हर चीज के लिए हम धन्यवाद प्रभु को स्तुति बोलना। Everything that has breath praise the Lord. अच्छा, जो हमारा अंदर से आवाज सांस आ रहे हैं, सांस के द्वारा यीशु मसीह को धन्यवाद कहना। And the word in the original Hebrew word, it's called Yahweh. हिब्रू में असली का अर्थ है यावे। And the person who takes the breath also says Yahweh of his last breath. ये आवाज से हम सांस आ रहे या हा बोलते हैं। So the breath that we have, for that breath we need to praise God. ये सांस हमारा अंदर से आ रहे, हम प्रभु को स्तुति करना। And many times we forget He is the one who gives the breath to us. जो सांस हमको दिया, हम कभी कभी भूल जाते हैं। And many wanted to see this day, but they are no more. बहुत लोग आज देखना चाहते हैं, आज वो लोग नहीं है। And many are in the hospital bed. बहुत लोग आज अभी हॉस्पिटल में बिस्तर में पड़ा है। There are many in the emergency ward. कुछ लोग इमरजेंसी वार्ड में हैं। And many are on the bed of their home. They are on the sick bed. और बीमारियों के उनका बिस्तर में पड़ा हुआ है, कुछ लोग अपने अपने घर में। But we are able to come to His presence. अच्छा है, हम प्रभु का सन्निधि में हम आया है। And the word of God says in 103 Psalms, second verse, the psalmist says, "Oh my soul, forget not all His benefits, what the Lord has done." ये वचन कहते हैं, ओ मेरा मन प्रभु को धन्यवाद कहो, स्तुति कहो। If anybody is talking to himself, we call him mad person. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ये तो दिमाग नहीं है। If he is speaking to himself, we will call him Yes. mad person. अपने आप हम बात करें तो वो सोचते हैं ये बड़ा पागल है। But the scientists have researched and said, if anybody is talking to himself and spending some time, quality time, a solemn time, he is actually a wise man. साइंटिस्ट लोग कहते हैं, बहुत ज्ञानी लोग कहते हैं, अपने आप अंदर बात करते हैं, ये बड़ा महान व्यक्ति है। You need to alone, solitude time, spend time alone with you yourself. हमेशा कुछ लोग अकेलापन में बात करते हैं, अकेलापन से प्रभु से बोलते हैं, वो अच्छा है। Maybe the psalmist is also spending himself, maybe looking into the mirror and saying, "Oh my soul, forget not benefits what the Lord has done." इधर दाऊद भी बोल रहे, ए मेरा मन परमेश्वर की स्तुति करो, ऐसा अपने आप अंदर से बोल रहे हैं। And why we need to say this? एक मिनट में बोल सकते हैं। Why we have to say again and again? क्यों हम बार बार ये बाहर बोलना? And why we need to remember what the Lord has done in our lives? परमेश्वर जो कहा वो क्यों बार बार याद करना?
And see, if I ask you what did you eat on Monday or night or Friday night, you might have forgotten by this time. अरे सोमवार को शनिवार को क्या कहा है, क्या खाया है बोले तो अच्छी तरह याद होता है. You might have forgotten by this time. आज तक वो भूल गया होगा. But Psalmist says that to remember, is talking to his soul and saying, remember his good things, what he has done to you. ये दाऊद कह रहे हैं अपना हृदय में आप प्रभु को याद करो. Why? Because we have a tendency to forget what good things have others have done. हमारा मन ऐसा है कभी-कभी जल्दी भूल जाते हैं. What good people have done, we may not remember. What people have done bad, that we remember more. जो लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा कहते हैं, वो भूल जाते हैं. जो बुरा बोलते हैं वो अच्छी तरह याद करते हैं. So we have a tendency to forget what the good things that Lord has done in our lives. प्रभु जो अच्छा काम किया वो भूल जाते हैं. Psalmist says, remembering, oh my soul, please don't forget what the benefits the Lord has done. ये दाऊद कह रहे हैं, ओ मेरे मन, जो प्रभु ने अच्छा कर्म किया, अच्छा कार्य किया, उसको ना भूलना. In the busy world, we might forget what we have done in our lives. ये जल्दबाजी में प्रभु क्या कर रहा हम भूल रहे हैं. See, on Friday 21st November, Rebecca and Bharat got a marriage reception. वो शुक्रवार का दिन में रिबेका भरत का शादी हुआ है. The marriage reception took out just 21st of November. 21 तारीख नवंबर को वो शादी हो गया. But in this busy world, we might have forgotten by now. इस जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं. But we need to remember what the Lord has done, the good things, even in our everyday life. हर दिन में प्रभु ने जो अच्छा कर्म किया, कार्य किया, हम याद करना. So everything that has breath, we need to praise God. Yes, हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद बोलना. That's the reason Psalmist is talking to himself and saying, "Oh my soul, don't forget what the Lord has done." दाऊद कह रहे हैं बार बार, ओ मेरा मन, परमेश्वर ने जो किया उसको याद करो. Why God doesn't give the moment we are born Titanic ship? क्यों ये हम पैदा हुआ टाइटैनिक शिप में जब जा रहे थे. Why God has not given us White House the moment we are born? हम जब पैदा हुआ व्हाइट हाउस, ये सफेद का बंगला हमको क्यों नहीं दिया अमेरिका में? Why God has not given a Lamborghini or Ferrari or Jaguar or BMW or Mercedes Benz? Mercedes Benz कार और बड़ा बड़ा कार हमको क्यों नहीं दिया परमेश्वर ने? Why God takes time to give anything that we ask? जो हम पूछ रहे हैं इतना ज्यादा लंबा समय क्यों ले रहे हैं प्रभु? God wants to know that He is a giver and we are the receiver. एक याद करना, परमेश्वर देने वाला है, हम लेने वाला है. And He wants to make sure that we are asking, so that we need to remember to give thanks to Him. क्योंकि हम याद करना, प्रभु हमको दे रहे हैं, उसको जो दे रहे उसको याद करना, उसको धन्यवाद कहना. We have a forgetful heart, those things, good things that God has done in our lives. हमारा दिमाग ऐसा है जो प्रभु ने अच्छा काम कर्म किया है उसको भूल जाते, वो हमारा मन है. The moment you are born till the toddler, God has been protecting you. जब आप पैदा हुआ आज तक हम संभाल के रखा परमेश्वर. As a toddler, as you're growing, as a teenager, God was protecting you. और बचपन में, जवानी में, ये बुढ़ापन में, हर समय में प्रभु हमको बचा रहे हैं. As a teenager to a youth in 20s and 9, God has been protecting you. 19 साल 20 साल में, जवानी में इतना हमको देखभाल कर रहे परमेश्वर हमको. In mid-age crisis, He has been protecting you. ये 20वां साल में, बीच का समय में हमको देखभाल कर रहे हैं. So sometimes we forget what God has been doing in our lives. कभी-कभी हम भूल जाते हैं परमेश्वर जो अच्छा कर्म कार्य किया हमारा जिंदगी में. That's the reason writer says, "Blow, blow, thou art wind and rain. Thou hast not wicked as bad, sinful, ungratitude." Sorry again. I'll tell it in Telugu. చలిగాలి వీచు వీచు కృతజ్ఞత లేని పాప మానవుని కంటే నువ్వేమి చెడ్డదానివి కాదు. हवा, ठंडी हवा आ रहे और वो जो धन्यवाद आप नहीं बोल रहे हैं परमेश्वर को. See, in America, this time in December, January, February, there will be snow falling. इस समय में अमेरिका में बहुत बर्फ गिरते हैं. And they have a long coat. उनका लंबा कोट भी होता है. And they have a coat again. उसका कोट के ऊपर और एक कोट होता है. Blazer.
Then they have a waistcoat. और वेस्ट को बोल के हाफ कोट भी होता है, And then they have a shirt. उसका अंदर शर्ट भी होता है, Then they have a bunian. अंदर बनियन भी होता है, And the skin. उसका स्किन के ऊपर और एक डालते हैं, And the bone. और उसका अंदर बोन भी है. And to the bone marrow, there will be a kind of a cool breeze above the houses, all those snow, on the top of the snow. It will be razor sharp as razor to kill anybody. You know, many times old people, little children, they die because of that cool breezes. इतना ठंडी हवा आते है, बोन का अंदर एक रस होता है, उसका अंदर खोल डाके बहुत लोग सिक हो जाते हैं, बीमारी हो जाते हैं, And both लोग मर जाते हैं. अब बहुत लोग मर भी जाते हैं. And because of that, they write in their newspapers, so many people died because of cool breezes and cool air. अखबार में लिखते हैं ये ठंडी ठंडी हवा आया इसलिए इतना लोग मर गए बोल के अखबार में लिखते हैं. And he is comparing to that cool air, and he says, blow, blow thou what winter wind, thou was not wicked as man sinful and gratitude. इतना ठंडी हवा आ रहे, फिर भी इतना ठंडी हवा से प्रभु हमको बचा रहे हैं. No, he's comparing our life to that thandi hava. ये ठंडी हवा से उनको बोल रहे यीशु मसीह. He is comparing, the writer is comparing, the thandi hava is doing her job in blowing, but man has forgotten to give thanks to the Lord. या इतना ठंडी हवा से आदमी को बचा रहा है, फिर भी आदमी परमेश्वर को याद नहीं कर रहे. And what the angels are doing in heaven. ये स्वर्गदूत स्वर्ग में क्या करते हैं? If you turn with me to Revelation chapter 7. और प्रकाशित वाक्य में 7 अध्याय में. And you know, the psalmist, the writer says in 7th chapter and 9th verse. 7वें अध्याय 9 पद में ये యోహాన్ ऐसा लिख रहे. And he says, అటు తర్వాత నేను చూడగా ఇదిగో ప్రతి జనములో నుండి, ప్రతి వంశంలో నుండి, ప్రతి ప్రజలో నుండి, ఆయా భాషలో మాట్లాడు వారిలో నుండి ఎవరును లెక్కింపలేని ఒక గొప్ప సమూహంను నేను చూచితిని. इधर ऐसा लिखा है, बहुत किस्म का लोग, बहुत राष्ट्र का लोग, बहुत देश का लोग, बहुत किस्म का और बहुत बड़ा भाषा करने वाला लोग, ये बड़ा समूह हो गया, बड़ा झुंड हो गया. ఎవడును లెక్కింపజాలని ఒక గొప్ప సైన్యంగా వారయ్యారు. ये कोई गिनती नहीं कर सकते, इतना बड़ा सैन्य समूह है. సమూహముగా కనబడెను. ऐसा समूह दिखाई दिया. వారు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని, वो लोग सफेद वस्त्र पहना అండ్ ఖర్జూరపు చెట్టును పట్టుకొని, और खजूर का फल पेड़ पकड़ा. సింహాసనముడైన ఇవ్వని ఎదుట, सिंहासन में जो बैठा है उनका सामने, గొర్రె పిల్ల ఎదుటను, और मेमना का सामने నిలవబడి, खड़े होके, సింహాసనాసీనుడైన వాడు, वो जो सिंहासन में बैठा है, మన దేవునికిని, हमारा परमेश्वर को, గొర్రె పిల్లకును, और मेमना को, మన రక్షకుడైన, हमारा जो उद्धार करता, మహాశబ్దముతో, महा और शब्द से రక్షణ స్తోత్రములు, जो उद्धार दिया उसको धन्यवाद, ఎలుగెత్తి చెప్పిరి, और जोर से बोल रहे हैं. దేవదూతలను, और स्वर्गदूत, సింహాసనం చుట్టూను, और जो सिंहासन के चारों तरफ, పెద్దలను, और बड़ा लोग సింహాసనం మీద సాగిలపడి, और सिंहासन के सामने घुटने टेक के, యుగ యుగములు, और युगान युग మహా దేవునికి महान परमेश्वर को స్తోత్రము చేయుచుండిరి. स्तुति कर रहे हैं. Nobody can count the angels, the millions and millions of angels are worshiping the Lord. इतना स्वर्गदूत आराधना कर रहे हैं, करोड़ों 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 स्वर्गदूत हम गिनती नहीं कर सकते हैं. So why God has to create man to worship him? क्यों आदमी परमेश्वर को आराधना करना? If you don't feel the sound, you will increase the sound here. ये आवाज नहीं आए तो आवाज बढ़ाएंगे उधर से मशीन से. If you think one speaker is not enough, then you will get 2 speakers, 3 speakers, 4 speakers. अगर एक स्पीकर जो आ रहे हैं कम आ रहे तो दूसरा स्पीकर लगाएंगे, नहीं है तो तीसरा स्पीकर भी लगाएंगे. Why God has not created angels and seraphims and cherubims? क्यों स्वर्गदूतों को सिराबियों को वो बनाया? Why he has not created? Why
वही क्यों बनाया? Why he has created them? Why he has not created man? आदमी को क्यों बनाया? स्वर्गदूत को क्यों बनाया? Why can't God created more angels? No. इतना और ज्यादा क्यों नहीं बनाया? Why he created man? क्यों आदमी को परमेश्वर ने बनाया? Before he created man, he created everything that needed for man. आदमी बनाने से पहले ये सृष्टि को, सर्व सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। And with all these things, we need to worship God. ये सब चीजों के लिए परमेश्वर को आराधना करना है। And who is the Lamb of God? कौन है ये मेमना? Who is this Lamb of God? कौन है ये मेमना? And what is this Lamb of God has done? ये परमेश्वर का मेमना ने क्या किया? Who is this bridegroom? ये Who is this स्त्री कौन है? Who is this bridegroom? ये पुरुष ये कौन है? Is that Jesus? वो ये यीशु है। And what did he do? वो क्या किया? He has laid his life for humanity. हाँ, हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। He has become an atonement for humanity. हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। And he has become a propitiation for us. उन्होंने हमारे लिए बहुत वचन बता दिया। He has become a sacrifice and ransom for us. हमारे लिए बलि हो गया। And who is this? कौन है वो? Who is this Lamb of God? ये कौन है ये मेमना? And who is he? ये मेमना कौन है? परमेश्वर के मेमना? He is the bridegroom. ब्राइडग्रूम हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे? दूल्हा। यस। ये दूल्हा कौन है? Revelation 19:8 verse will read. प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 8th verse. 8 पद 18:8 Yeah, please. प्रकाशित वाक्य 19 verse 9. మరియు అతడు నాతో ఇలాగ చెప్పెను, గొర్రెపిల్ల పెళ్లి విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులని వ్రాయము, మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథార్థమైన మాటలని నాతో చెప్పెను. And who is this Gorapilla? ये परमेश्वर का मौन है, मेमना कौन है? Is Jesus Christ. ओ यीशु मसीह। And he has laid his life for us. उन्होंने हमारे लिए अपने जान दे दिया। Usually in reception songs we'll sing Gorapilla Vivahosa Samayamochan. And the Lord Jesus is going to come in the mid-air. We'll have 7 years of reception. But before that, till we worship him face to face, we will worship him because he has become the Lamb of God, who has become a bride of us, who has a bridegroom of us, who died for us. And to his good, to the reception of the Lamb of God, we will worship. ये परमेश्वर का मेमना का बारे में शादियों में गाना गाते हैं। ये कब तक गाते हैं? जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक हम गाते रहेंगे, And we will क्योंकि वो दुल्हन हमारा दुल्हन था। We will worship this Lamb of God who has taken the sins of the world. ये मेमना के लिए हम आराधना करना। He is the bridegroom. He is the Lamb of God. उन्होंने दुल्हन है, हम उनके लिए गाना गाना। We are Gorrepilla's Bharya. हाँ, हम कौन है? ये दुल्हन का पत्नी है। So as recipient of its blessing, we will worship the Lord. हाँ, जो हम उद्धार पाया है और आशीष पाया है, उसके लिए हम आराधना करें। As we are washed by the blood of the Lamb of God, we will worship the Lord. परमेश्वर का, यीशु मसीह का पवित्र खून में हम धो लिया, हमारा पापों को धो लिया है, इसके लिए उनको आराधना करना। And we have a blessed privilege week after week to worship the Lord. हफ्ता के बाद हफ्ता ये मौका हम मिल रहे आराधना करने के लिए। Why we come? क्यों इधर आया है हम? Why we worship? क्यों हम आराधना करना? Because we are washed by the blood of the Lamb of God. क्योंकि परमेश्वर मेमना के खून के द्वारा हम धोया हुआ लोग हैं। 1 John 1:7 says, the blood of Jesus cleansed us from all unrighteousness. परमेश्वर का ये खून में हमारा पाप धो लिया। यूहन्ना 1 में ऐसा लिखा है। 1 John 1:9 says, we have confessed and he is faithful and just to forgive us from all unrighteousness. अगर हम अपना मुंह से कहे तो प्रभु हम पाप किया है,
हमको दो लिया है, हम ऐसे धन्यवाद करे तो वही आराधना है। Romans 5:8 says, while we are yet sinners, God demonstrated his love. रोमा 8 में लिखा है परमेश्वर अपना प्रेम दिखाया प्रभु यीशु में And in Revelation 7 and verse 14 it says, అందుకు నేను అయ్యో నీకే తెలియననగా అతడు వీరు మహాశ్రమల నుండి వచ్చిన వారు గొర్రెపిల్ల రక్తములో తమ వస్త్రములు ఉతుక్కున్నవారు తెలుపు చేసుకున్నారు. Because we are washed by the blood of Jesus, of the Lamb of God, we can worship. या हमारा पाप परमेश्वर का खून में धो लिया, यीशु मसीह का खून में धो लिया है, इसलिए हम यीशु मसीह को परमेश्वर को आराधना करना, Let's worship. हम आराधना करेंगे।